Asmita, today our Senate. Today, we all are gathered here to celebrate on the occasion of Vasant Panchami. Vasant Panchami, also known as Saraswati Puja, will mark the arrival of Spring Festival. This is because, according to Hindu mythology, it was on this day that Lord Brahma created the universe. It encourages spiritual growth and shed the darkness of ignorance and embrace the light of knowledge. Now I request our principal, Mr. B. Jitesh Shetty, to light the lamp and perform the puja. అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు హరిణి. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. శరదిందు వికాస మందహాసం పురదింది వరదక్షిణాభిరామం అరవింద సమాన సుందరస్యాం అరవిందాసన సుందరి ఉపాసే. శరత్కాలంలో వెన్నెల వంటి స్వచ్ఛమైన ముఖముతో జ్ఞానకాంతిని ప్రసరించే నేత్రములతో ధవల వస్త్రధారి అయి సమస్త లోకానికి విద్యను ప్రసాదించే శారదాదేవికి శతవందనాలు. ఈరోజు అనగా ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన జరుగుతున్న సరస్వతి మాతా జన్మదినోత్సవం తెలుగు కాలమాన ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం మాఘశుద్ధ పంచమి నాడు సరస్వతి అమ్మవారికి విశేషమైన పూజలు చేయటం మన ధర్మం. విద్యార్థులందరికీ జ్ఞానమునిచ్చే తల్లి చదువుల తల్లి సరస్వతి. ఆ జ్ఞానాన్ని విద్యను ఎక్కువగా ప్రసాదించమని కోరుకున్నాం. ధన్యవాదాలు. सुप्रभात, मेरा नाम तिथि है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं माँ सरस्वती की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। माँ सरस्वती विद्या की देवी है। इस दिन माँ सरस्वती का अवतरण माना जाता है। विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने भूलोक में मनुष्य की रचना की। एक बार ब्रह्मा जी भूलोक का चक्कर लगा रहे थे और देखा कि पशु पक्षी मनुष्य सब शांत है। क्यों? बोलने की शक्ति उनके पास नहीं थी। ब्रह्मा जी को लगा कि उनकी रचना में कोई कमी है, इसीलिए उन्होंने कमंडल उठाया और थोड़ा जल नीचे छिड़का। तभी वहाँ एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें एक अलौकिक चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ वरदेवी की मुद्रा, तीसरे में पुस्तक, चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने सूजन करता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, भूलोक के लोग इधर उधर विचरण कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वाणी नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर सकते। स्वरूप उनका जीवन निरस फीका हो गया है। इसीलिए आपको अपनी वीणा से संसार को वाक शक्ति प्रदान करनी होगी, ताकि लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सके, एक दूसरे के विचार समझ सके। इसीलिए पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना माँ सरस्वती के लिए परम कर्तव्य हो गया। उन्होंने अपनी वीणा को तारों को छेद के उसमें से जो मधुर ध्वनि निकली, उस ध्वनि से मानव जाति को, पशु पक्षी आदि को वाणी का वरदान मिल गया। सब आपस में बोलने लगे। नदियाँ कल कल, हवाएं सन आवाज करके बहने लगी। वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा। इतने दिनों से व्याप्त सन्नाटे खामोशी का अंत हुआ। तब से लोग विद्या, ज्ञान, संगीत की देवी के रूप में सरस्वती जी की पूजा करने लगे। वसंत पंचमी को सरस्वती देवी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। समस्त सृष्टि को स्वर प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की पूजा अर्चना सब लोग सुर असुर दोनों करते हैं। माघ महीने की पंचमी के दिन लोग जरत
सरस्वती जन्मोत्सव मनाते हैं और तभी से वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। वाग्देव्यै नमः। आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम यानिकाय पापानि धर्मां कोई प्रसादया अनंत विष्णु प्रसन्न पूजा करे आप हमारे दास नमस्ते अमर नमः अच्छा जग सिर
Just repeat, they will repeat the sloka. Today is Saraswati. What is Saraswati? Goddess of knowledge. So, if you don't give this much respect, then coming to your school is all waste. So just repeat. Slowly they will tell. Hold your hands, all of you. Do this. And just repeat. Okay? Only one sloka. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शूद्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड
धन्यवाद. Today is Vasant Panchami. It's a festival of praising the Lord of Saraswati. It is actually 40 days before Holi. When Holi comes, 40 days next in the spring. It's the spring which will come as Holi. So 40 days before this festival is celebrated. Okay? So just for you to understand why we do it. So you should understand all these festivals what we celebrate in the school is to make you understand why Dasara, why Diwali, why Holi, why every festival is we are showing you. You all can know through net. I understand you are very good with technology, but you should know, you should understand, you should see, you should know what it is. Okay? Thank you. A vote of thanks on the occasion of Vasant Panchami. Firstly, I would like to thank our founder principal, Dr. Mrs. V. Jyoti Reddy ma'am, for her guidance and support. I thank our diligent principal, Mr. V. Jivitesh Reddy, for his unwavering support. I also thank our secretary, Mrs. Sangeeta Raghuram, for her relentless efforts to guide us. I thank our senior vice principal, Dr. Lakshmi Krishnan, and our vice principal, Mrs. Sunita Srinivas, for their unending dedication. I thank the coordinators, HODs, and teachers for their cooperation. I also thank the music and dance department, art and craft department, IT department, and all the sub-staffs for making this program a grand success. I once again wish you all a very happy Vasant Panchami. Thank you.